children, today let's start with chapter number 19, Judiciary. So in this chapter, I will tell you about the judiciary. It is one of the organ of our government. So judiciary is the third organ of the government that play important role. It is with solve dispute. जो dispute solve करते हैं किसके बीच में, legislative और executive के बीच में. So अगर judiciary नहीं होगी, without judiciary no government can work smoothly. Apart from the जो judiciary है, वो dispute solve करती है. Legislature executive में तो करती है, उसके साथ states और central के बीच में भी करती है. In democratic country like ours, India, we have written constitution and the sole power to interrupt the constitution. If some disputes arise between center and the state or between state themselves, it has to be settled by the judiciary. That is why in judiciary, Supreme Court is called final interpreter and guardian of the constitution. So next, Supreme Court. The Supreme Court is the apex of the judiciary. अगर हम इसकी composition की बात करें, इसमें चीफ जस्टिस होते हैं और कुछ अदर जज होते हैं. And the number of judges are changed by the parliament and presidents make appointment of judges including chief justice. ये existing judges को सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं and for appointment they have to take the consult of what chief justice of India. CJI का consult लेना पड़ता है. Next is qualification. Judge of the Supreme Court cannot be a citizen of India. A judge of the Supreme Court must be a citizen of India. Citizen होना चाहिए इंडिया का. ठीक है, 5 years उसको जज होना चाहिए हाई कोर्ट में और एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में एटलीस्ट 10 years. ठीक है. नाउ पे एलोकेशन की बात करें, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको 2,80,000 पर मंथ एंड दे गेट फ्री एंड फर्निश्ड हाउस इन अ कार विद द ड्राइवर टू अटेंड देयर ऑफिशियल ड्यूटी. उनको स्पेशल अलाउंसेस भी मिलते हैं. टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें, दे विल रिमेन द ऑफिस टिल 65 years of age. दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. देयर सर्विस कैन नॉट बी टर्मिनेटेड बाय. ठीक है, प्रेसिडेंट इनकी सर्विस को टर्मिनेट नहीं करते. नाउ ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. वी हैव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन. द सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर स्टेट और बिटवीन टू और मोर स्टेट. वहीं हम बात करें एपेलाइट ज्यूरिडिक्शन, इसमें आपके सिविल और क्रिमिनल केस दोनों आ जाते हैं. और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट. जुडिशरी हमारी फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, एक रिटर्न क्या देती है, डायरेक्शन देती है टू द कंसर्न अथॉरिटी. Advisory or consultative jurisdiction. President must obtain opinion of the judiciary on the question of law. Which is opinion is important. The court may report. Court report कर सकता है on the opinion after hearing such as it thinks. Now guardian of the constitution. The Supreme Court act as a guardian of the constitution. Right? If the government passes any law or issue any order which in the violation, the Supreme Court has power to declare law or order unconstitutional. वो law और order को क्या कर सकता है, unconstitutional declare कर सकता है. Court of record, it means that all its decision and proceeding are published and kept as record. They can be quoted as a precedents of other cases. And important decision of the High Court are also kept in record for the future reference. High Court. There is a hierarchy of courts at the state level with the High Court at apex. Our Constitution provides that there shall be a High Court or a state or each state. The Parliament may be law establishment for the common high court. So every high court is court of record, which means decision have an evidently value which can be questioned. इनको आप क्वेश्चन कर सकते हो. कॉम्पोजिशन इसमें एक तो चीफ जस्टिस होता है और अदर जजेस होते हैं. अपॉइंटमेंट कौन करता है, चीफ जस्टिस का हाई कोर्ट में प्रेसिडेंट करते हैं. किसके कंसल्टेंट से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर. Every judge of high court holds the office for attaining the age of 62 years. He can be removed from the office. अगर कोई मिसबिहेवियर हुआ है तो हम इनको ऑफिस से निकाल सकते हैं. एलिजिबिलिटी की बात करें, इक्विटी सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, नॉट अबव एज ऑफ 62 ईयर, वर्कड एज जुडिशियल ऑफिसर एटलीस्ट 10 years और एडवोकेट की प्रैक्टिस भी करिए फॉर एटलीस्ट 10 years. पे एंड अलाउंसेस की बात करें हम, द सैलरी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज 3,50,000 पर मंथ एंड अदर जजेस 2,25,000 पर मंथ and their salaries and allowances are charged on the consolidated fund of state, not consolidated fund of India. किस पे चार्ज करते हैं, consolidated fund of state. Jurisdiction की बात करें, original jurisdiction is limited but cases related to fundamental right, divorce, wills or other marriage can be brought directly to the High Court. High Court has a power to issue writ and power to interpret the constitution, and this power is also known as power of judicial review. Next is subordinate court. The court at the district level and below it are known as subordinate court. ठीक है, इन्हें हम एज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट भी कहते हैं. वहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इज ऑफ टू टाइप, दैट इज सिविल एंड क्रिमिनल.
The judicial official while dealing with the civil category, there are district judges, and while dealing with criminal cases, अगर criminal cases से deal कर रहा है तो क्या होंगे session judges, right? And they also hear appeals to the decision of lower civil and criminal cases, appealing against decision of district. वहीं हम रेवेन्यू कोर्ट की बात करें, द कोर्ट्स डील विद द मैटर्स pertaining to land revenue and the border of revenue is highest, राइट? और जो आपके तहसीलदार होते हैं, मतलब जो हेड होता है डिविजनल कमिश्नर, वो तहसीलदार पटवारी, वो किसके वर्क में, इसी के डिवीजन में काम करते हैं. द रोल ऑफ जुडिशरी, रिजोल्यूशन of disputes. What happens? Several sorts of disputes between citizens such as deceit, fight, murder, theft, thereafter life. They could be dispute between government and citizen. ठीक है, आप इसको meet करने के इसके acceptation को. They could be the violation of law and fundamental right of the citizen by the government. Right? So we can say that the judicial system provides mechanism for resolving dispute. किसके बीच में? Citizens or citizens and the government, or between two government or between the state or center. Upholding the law and enforcing fundamental rights. Every citizen of India can approach High Court. आप High Court भी जा सकते हो, आप Supreme Court भी जा सकते हो, if you believe that your fundamental rights have been violated. So the agriculture labor Hakim said in West Bengal, what he did, he was running train and got injured. So what happened? Several government hospitals refused to admit him, and his condition got worse, and he had to expend a lot of money in the private hospitals. So, on hearing the case, the Supreme Court in 1996 ruled that Article 21 of Indian Constitution, what it provides, ये हमारे हर एक citizen को क्या provide करता है, that you have a fundamental right of life and right to health. And then we have judicial review. So the Supreme Court and the High Court have the power to interpret Constitution. They can declare invalid any law, right? And if they find such a law or action in violation of the basic structure of the Constitution, the Supreme Court of India has ruled that the core or basic principle of the Constitution cannot be changed. कोई भी चीज मतलब पार्लियामेंट इनको चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो बेसिक स्ट्रक्चर हो या कोई बेसिक प्रिंसिपल हो या कोर प्रिंसिपल हो. Judicial precedent in some cases clauses of certain law may not be clear to take the decision. जो हाई कोर्ट है वो इंटरप्रेट कर सकता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? कॉन्स्टिट्यूटिव प्रिंसिपल. एडवाइजरी जुरिडिक्शन में क्या होता है? ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर सकता है रिलेटेड विद लॉ, एंड यू कैन टेक द ओपिनियन ऑफ द जुडिशरी आल्सो इन दिस. नाउ इंडिपेंडेंस इन जुडिशरी, इट इज वन ऑफ द इंडिपेंडेंट ब्रांच एंड ऑर्गन ऑफ द अदर ब्रांचेस में. आपका लेजिस्लेचर आता है, इसका काम है लॉ बनाना. एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को एग्जीक्यूट करना, राइट? So the courts are not under the government and they do not act on its behalf. उसके behalf पे act नहीं करते. And all judges in the High Court as well as in the Supreme Court, they are appointed with very little interference from the other branches of the state. So it is independence of judiciary that allows the court to play a central. ठीक है, वो क्या कर सकता है? Central role play कर सकता है without misusing power. The need of independent judiciary is necessary. देखो हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत जरूरी है. वाई? बिकॉज इट प्रोवाइड्स डिफेंस ऑफ फंडामेंटल राइट. इफ सिटीजन फील दैट हिज फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, वो कहा जा सकता है? कोर्ट में जा सकता है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज मेड सर्टेन प्रोविजन. द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का, इट इज यूजुअली अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. In practice, if we talk about, it now means that senior judges of the Supreme Court select new judges of the Supreme Court and High Court. And there is very little scope of interference by the political executive. जो political executive के बीच के interference बहुत कम है. और Chief Justice of High Court is appointed by the President. किसके consultants में? In the consultants of Chief Justice of India. A judge cannot be dismissed from service. Impeaching a judge, it is difficult for it to be happen. The action and the decision of the judges in their official capacity could be criticized even when Parliament accepts a resolution. Salary of the judges cannot be reduced by anyone. After retirement, the judges of the Supreme Court shall not be plead any court before any authority. So मैं आपको एक इंटीग्रेशन बताती हूँ appellate system का. In that which exists in India, जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है कि कोई भी पर्सन वो अपने हायर कोर्ट में जाके अपील कर सकता है if he thinks that his fundamental rights are being violated. So the decision made by the Supreme Court are binding on all the court. In speech made by 26 November by the Justice of India,
केजी बालकृष्ण, उन्होंने क्या कहा कि जो इंडियन जुडिशरी है उसमें 1 सुप्रीम कोर्ट है, 34 जजेस है, 25 हाई कोर्ट्स है, जिसमें आपके 114 जजेस है एंड 22,677 सबऑर्डिनेट. So High Court has authority to supervise working of all subordinate courts, right? And the subordinate court is more commonly known by different name, like additional session judge. इसमें आपके डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते हैं और सिविल जज. नाउ हियर द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी इज गिवन. वी हैव हाई कोर्ट. देखो हर एक का अपना अपना हाई कोर्ट है. उसमें आपके डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज होते हैं एंड वी हैव मेट्रोपॉलिटन, सिविल एंड सेशन जज, प्रेसिडेंसी स्मॉल. ये आपका डिस्ट्रिक्ट में होता है और ये आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया में, राइट. और डिस्ट्रिक्ट में हमारा सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट होता है, प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट होता है और आपका क्रिमिनल का कोर्ट ऑफ सेशन होता है, राइट. इफ यू टॉक अबाउट सिविल वी हैव मुंसिफ कोर्ट और न्याय कोर्ट, और क्रिमिनल की बात करें सबऑर्डिनेट और पंचायत. वहीं सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट कोर्ट की बात करें इसमें तो आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है, राइट. और दूसरा क्या होता है आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. इफ यू टॉक अबाउट सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, इसमें क्या होता है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. ये अपॉइंट करता है डिस्ट्रिक्ट जजेस को एंड इट इज एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी जो है वो जितने भी सिविल कोर्ट्स आपके इंडिया में डिस्ट्रिक्ट में उनको क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, राइट. द डिस्ट्रिक्ट जजेस व्हेन डीलिंग विद क्रिमिनल केस, जब वो क्रिमिनल केस के साथ डील करे तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सेशन जज. सब जज कोर्ट, इट कम्स नेक्स्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सब जज हैव वेरियस कैटेगरी. दे डील विद द केसेस जिसमें क्या होता है नॉट मोर देन 5,000 रुपीज होता है. अपील्स इफ एनी अगेंस्ट देयर डिसीजन कैन बी ब्रॉट टू द डिस्ट्रिक्ट. मुंसिफ कोर्ट क्या होता है, these courts are lower than court of sub judges. मुंसिफ जो होता है वो डील करता है और नॉट मोर देन 2,000 आर इन्वॉल्व, मतलब जो केस 2,000 से ज्यादा का नहीं होगा वो. स्मॉल जजेस, जूनियर मोस्ट मैजिस्ट्रेट हियर हेड दिस कोर्ट. देयर इज नो अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट, किसी भी तरीके की कोई अपील नहीं. क्रिमिनल कोर्ट्स में आपका डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कोर्ट आता है, ये हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है. ये सेशन जज के बेसिस पे ही वर्क करता है. इट इज इन द सेशन में होता है, राइट. देन वी हैव कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. ये आपके जितने भी सेकंड क्लास एज वेल एज जितने भी थर्ड क्लास के आपके मैजिस्ट्रेट होंगे ये फाइन इम्पोज कर सकते हैं अप टू 1,000 और इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं 2 ईयर और दोनों चीज भी दे सकते हैं. कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास आपको इम्प्रिजनमेंट दे सकता है 6 मंथ्स का और फाइन लगा सकते हैं 200 और वो. कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास, ये थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट होता है, ये इम्प्रिजनमेंट दे सकता है खाली 1 मंथ का और फाइन ₹50 और वो. केस स्टडी फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. So on 2 December 1980, married woman Sudha died in the hospital due to burns. Her family mother side filed a case in the court. 4 neighbors have witnessed stated the lower court that on night December 1, they heard the Sudha scream and forced their way to her flat. And there was Sudha standing with her sari flames. They existing fire by the wrapping her gunny bags and blanket. Sudha told them her mother-in-law has poured kerosene oil on her and her husband Lakshman had lit a fire. Right? Sudha families and neighborhood started. Sudha has been subjected to torture and loss, including brother-in-law. इसमें brother-in-law भी included थे for demanding more cash. मतलब main basically जो केस था वो डॉरी का था. Right? As per their defense, Lakshman and his mother stated that Sudha sari had accidentally caught fire while she was heating a milk, and the trial court convicted Lakshman and his mother and brother-in-law and sentenced all 3 of them with a death sentence. So in November 1983, 3 accused appealed to the High Court against the verdict of the trial court, and hearing the argument of all the lawyers, decided the fire was accident and caused by the kerosene stove that acquitted all the 3. So in 1985, what happened? Indian Federation of Lawyers appealed the Supreme Court. It found Lakshman and his mother guilty, but acquitted brother-in-law Shivaji to lack of enough evidence. क्योंकि ये ज़्यादा evidence थे. Now civil and criminal cases. So the cases tried in our court are of 2 types, civil and criminal. Civil cases किस पर deal करते हैं? Disputes like sale of land, purchase of goods, rent matter, divorce cases. Criminal cases is crime against our society. जैसे कोई adulteration हुआ, forgery, theft, robbery, harassing a woman. In civil case, a petition has to be filed before the relevant court. Civil cases can be settled outside the
court, and the verdict of the civil court is injunction or payment of compensation. Criminal cases usually begin with loading of FI, that is first information. Such cases cannot be settled outside the court as they involve the state also. If found guilty, the accused can be punished to jail and it can be fined also. Access to the court for the common purpose, access to the court is access is justice. Now we can say that for a poor person who cannot read and whose family depends upon daily wage, even the idea of going to the court to justice look for as a dream. A vast majority of poor people in India जो नहीं जाते, भाई पैसे नहीं है, ठीक है, उनको ऐसा लगता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मैकेनिज्म दिया दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिससे आप इंक्रीज कर सकते हो एक्सेस ऑफ जस्टिस. इवन अ बेटर or telegram to Supreme Court or the High Court could be treated as PIL by the individual. So what happened? Large number of bonded laborers were rescued in a human work condition. In 2001, drought in Rajasthan and Odisha caused millions of face acute shortage of food. And meanwhile, what's happened? Full of graves being eaten by the rights and organization People Union of Civil Liberties filed a PIL to the Supreme Court. The court interpreted Article 21 of the Constitution, that is right to life, is not the right to food be included. It therefore directed government to provide more employment, to provide food at cheaper price. इन्होंने दो फूड कमिश्नर जो थे उनको भी अपॉइंट करा, and some activists working on the issue of concerning right to shelter and housing, and poor believe that recent court judgments are against the interest of common person. So it tried to protect the livelihood of the slum dwellers. They said the right to livelihood is an important facet of right to life, and the poor people choose that what pavement of the slum in the victim of their faces have small jobs. Now justice delays is justice denied. So usually courts have unreasonable long number of years to hear the case. Probably क्योंकि एक तो प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद ज्यादा पेपर वर्क होता है, और जो जजेस है मजिस्ट्रेट है वो कम. So for example, 43% of Hasimpura Meerut were killed on 22 May 1987. Families have been seeking justice for 20 years, 20 साल से. And the trial is ongoing and facing criminal prosecution of alleged murder. Common person really dares to access the court. भाई जो common person होता है वो डरता है. So लोक अदालत and speedy justice. So in response to above problem, deal in courts and provide fast and affordable justice, लोक अदालत have been introduced in recent. फर्स्ट जो लोक अदालत थी वो दिल्ली में मीट करती थी इन 1985. फिर वो उसने 150 पेंडिंग केस जो थे रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ कंपेंशन ऑफ रिलेटिव, एंड सिस्टम ऑफ लोक अदालत हैज बिकम नाउ पॉपुलर. अब आप आज के टाइम पे देखिए कि जो सिस्टम है लोक अदालत का वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है. इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी, सर्व एज अ चेक ऑन द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और सेफगार्ड करती है फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कंट्री, राइट. And independent judiciary with an integrated system of court and an appellate system is a key feature. ये क्या है? Key feature है आपका Indian democracy, right? This is all in this chapter. Now we will do the exercise. Now take the correct option. The final interpreter of the Constitution. Judiciary. The Chief Justice is appointed by. कौन appoint करता है Chief Justice को? President. Supreme Court consists of dash judges. Froggery is a civil, criminal, or political. Criminal. Decisions made by the high courts are binding on the lower courts. Criminal courts के अंदर था, जो criminal courts है वो किसके अंदर आते हैं? Now fill in the blanks. Two or more states have or can also share the same High Court. No appeal can be made against in the order of Supreme Court. So far, no Indian judges have been impeached. A court exercises dash jurisdiction when it's give advice on the matter relating to constitution.
The procedure to remove judges. The procedure to remove the judges of the dash is same as that of Supreme Court. Supreme Court consists of dash member 34. Now write T for true and F for false statement. The third Lok Adalat was held in Delhi in 1952. True. Justice delayed is justice denied. It's true. Legal procedures are very cheap in India. False. They are not very cheap. Lok Adalat also gives slow justice. Impeaching a judge is as difficult in impeaching the president. It's true. The letter to the Supreme Court could be treated as PI. Supreme Court enact the apex of the judicial system. An appeal lies to the Supreme Court if the High Court certifies the case fit on the appeal of the Supreme Court. The judiciary in the state has a High Court as an apex body. The highest civil court in the district Lok Adalat was held in Delhi on October 6, 1986. Now answer the following. Write an essay to access to Indian courts. How is independence of judiciary installed? और आपको function बताना है judiciary in India. Right. Next is what do you understand by appellate system? लोक अदालत क्या होती है? आपको डिफरेंस देना है सिविल केस और क्रिमिनल केस. जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? Why is an independent judiciary essential? Importance बतानी judiciary के and what is advisory jurisdiction, right? This is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.